a few issues which can impact someone's permanent residence status in Canada, and these are so crucial for someone to maintain permanent residence and later a secure citizenship application that I thought I would not only talk in English but also in Urdu. Hello ladies and gentlemen, my name is Sajjad Malik. I'm a barrister and solicitor, a Canadian business and immigration lawyer, and I'm speaking to you from my office in Oakville, Ontario, Canada. Today, this video is a little unique because in this video, I'll not only talk about a topic in the English language, but I'll also talk in Urdu as well as Hindi. So my audience, those broader audience who may not have comfort in understanding English could also listen to this, because this topic is one of the most important topics. The issues which we are discussed are issues which can impact someone's permanent residence status in Canada, and these are so crucial for someone to maintain permanent residence and later a secure citizenship application that I thought I would not only talk in English but also in Urdu, so I have a broader audience. तो ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम सज्जाद मलिक है, मैं बैरिस्टर एंड सोलिसिटर हूँ और कनाडा में एक बिज़नेस और इमिग्रेशन लॉयर हूँ, और आपसे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने ओकविल ऑफिस से। ओकविल ओंटारियो सूबे का मेन सिटी है और यहाँ से मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए कि इस टॉपिक में हम एक ऐसे टॉपिक को छेड़ने जा रहे हैं जो किसी भी परमानेंट रेजिडेंट के लिए बहुत क्रूशल है, बिकॉज़ अगर वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो उनकी परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर भी इसका असर आएगा, और वो सिटीज़नशिप जो अल्टीमेट गोल होता है हर परमानेंट रेजिडेंट का, उसको सिक्योर करने में भी थोड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि वो उस सिटीज़नशिप एप्लीकेशन के गोल को अचीव ना कर सकें। So residency obligations is a concept which means that anyone who becomes a permanent resident of Canada, from that day onwards in a period of 5 years, that person must spend 730 days while living physically inside Canada. तो जब आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं उस दिन के बाद 5 साल के अरसे के अंदर आपको कम से कम 730 दिन कनाडा में फ़िज़िकली मौजूद होके गुजारने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये चांस है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंस को कैंसिल कर दिया जाए या आप परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस को लूज़ कर दें। Now the day you become a permanent resident, from that day onwards, if you have spent 730 days, you are in good standing, you are maintaining your residency obligations, and in that continuity, if you complete 1095 days in Canada, which is 3 years of physical presence in Canada, along with other factors, if you have successfully spent that time in Canada, you can even apply for Canadian citizenship. तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद अगले 5 साल के अंदर कम से कम 3 साल कनाडा में गुजार लेते हैं, तो ना सिर्फ आपकी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस मीट हो जाती हैं, बल्कि आप सिटीज़नशिप के एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सिटीज़नशिप के लिए कुछ और फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इट। नाउ what I commonly see people very regularly who have become permanent residents sometime in the past when it was easier to become a permanent resident. They may not have thought, or they could not realize the value of it. Then they started living outside because of their businesses, because of their jobs, some lucrative postings or other reasons, and then they could never spend those 730 days in Canada. Now it means that anyone who has not spent 730 days in Canada, that person may be in breach of residency obligations if there are no other valid excuses, those excuses or those reasons which are provided in law. So मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत रेगुलरली देखा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो अब परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने किसी ऐसे वक्त पे परमानेंट रेजिडेंस सिक्योर की जब वो कंपैरेटिवली आसान था आज के दौर के मुकाबले में, और उस वक्त उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस कितनी अहम हैं उस परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और उन्हें किसी भी वजह से कुछ दिन स्पेंड करने के बाद बाकी अरसा किसी और मुल्क में अपनी जॉब, अपने कारोबार या किसी और रीज़न की वजह से गुजारा। सो टेक्निकली ऐसे लोग ब्रीच ऑफ रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन के मुर्तकिब हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पे कुछ और रीज़न्स या रास्ते अवेलेबल
नहीं है उस सूरत में। बट कानून भी कुछ जगहों पे आपको रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस का एक्सक्यूज़ देता है। अगर आपने वो टाइम कनाडा में नहीं गुजारा तो वो टाइम आपका टुवर्ड्स रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस काउंट हो सकता है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट avenues, or what are different excuses or exemptions which are allowed to a person who is not able to physically remain in Canada for 730 days in a period of 5 years from becoming the permanent resident of Canada. Now, one excuse is that if you are living with your Canadian spouse abroad, a spouse who's a Canadian citizen, not a permanent resident, if you have been living with that spouse outside of Canada for the duration of period in which you were not present in Canada, that period may be counted towards the residency obligations. That period may be counted as you have fulfilled those residency obligations by living with that spouse in the same country, in the same city, in the same household, under the same roof for a period of time. Definitely you'll have to lead evidence to establish that factor. So एक excuse, एक provision जो कानून में given है, जिसमें आप कनाडा में फिज़िकली मौजूद ना होने के बावजूद भी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस मीट कर रहे होंगे, वो ये है कि अगर आप अपने कैनेडियन स्पाउस के साथ, हस्बैंड और वाइफ के साथ कनाडा से बाहर किसी और मुल्क में एक ही छत के नीचे उस पीरियड में रह रहे हैं जब आप फिज़िकली कनाडा में मौजूद नहीं हैं, तो वो पीरियड भी आपकी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस की तरफ काउंट हो सकता है। सेकेंड, the second reason or ground could be that if you have been living outside of Canada because you have been transferred out by a Canadian corporation or a Canadian government department or agency in a foreign jurisdiction, and because of that you are spending that time outside of Canada, that time may also be counted towards the residency obligation. So दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप कैनेडियन कंपनी में मुलाजिम थे कि परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद, और उस कैनेडियन कंपनी ने आपको बाहर के किसी मुल्क के अंदर ऐसी पोजीशन पे पोस्ट कर दिया जो एसेंशियल थी उस कंपनी के बिजनेस के लिए, और आप उस वजह से, उस मजबूरी से कनाडा से बाहर कुछ टाइम आपने गुजारा, तो वो टाइम चाहे वो प्राइवेट बिजनेस हो या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो, वो टाइम भी काउंट हो सकता है टुवर्ड्स योर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन। सो ऐसी सूरत में आपने रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस मीट की होंगी डिस्पाइट दिस कि आप कनाडा में फ़िज़िकली मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं, सिमिलर person who has been posted abroad, then that dependent of the person may also meet the residency obligations if that person has been living, for example, a child 6, 8, 9, 10 years old has been living with a parent abroad, posted abroad by a Canadian company, then that person may be exempt from the requirements or may be deemed to have met the residency obligations. Now, one most important factor or reason or excuse which I could lead here, or which I would like to share with you, is if you have strong, compelling, humanitarian and compassionate grounds which kept you away from Canada, then you may also request an exemption to an officer who is making a determination of your residency obligations. So उस सूरत में अगर आप के बहुत compelling grounds हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट हमदर्दी और इंसानी हमदर्दी के हवाले से कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपकी ज़िंदगी में थे जिस वजह से आप मजबूर हो गए कि आप कनाडा में लौट के ना आ सकें और फिज़िकली टाइम स्पेंड ना करें, तो वो टाइम भी ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स के तहत आपको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है या आपको रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस का ब्रीच माफ़ किया जा सकता है. सो दीज आर few important factors. Now you have to understand that all these factors you must establish on evidence. You have to make sure that the assessing officer, whoever is making a determination of your residency obligations, is convinced and you have enough evidence to establish all those factors, then your breach of residency obligations could be done. Now एक चीज़ जो हमने बहुत देखी है और वो ये है कि कई दफ़ा लोगों को somebody's लेमैन्स एडवाइस और किसी रिश्तेदार की एडवाइस पे या किसी इलीगल कंसल्टेंट की एडवाइस पे वो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम आके कनाडा में एक कंपनी बना लेते हैं और उस वजह से हम बाहर जाके रहना शुरू कर देते हैं तो क्या ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है. देखिए, ये कंपनी, कैनेडियन कंपनी,
अगर वो शेल कंपनी है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, वो आपने इसी पर्पस के लिए बनाई है कि आप उसको यूज़ करेंगे रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस में, तो बहुत एहतमाल ये है कि आप लेटर स्टेज के ऊपर आप ब्रीच ऑफ रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस को क्योर नहीं कर सकेंगे. सो इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ कंपनी solely for the purpose of meeting your residency obligations, then in that case you may be still considered in breach of residency obligations and you could not get excuse. Now, a few things I wish to caution you about are that never ever try to conceal the facts. If you have not lived in Canada, never claim in your application that you have spent certain period of time in Canada, because during that process, if and when the IRCC verifies your exits and entries into Canada, there is a likelihood that they will be able to notice that you never entered Canada during that period, but you're claiming it incorrectly on your application, which means you might be held having misrepresented to the IRCC, which will have grave consequences. So अगर आप किसी वजह से कनाडा में नहीं रह सके अपनी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मत लिखिए, बिकॉज वो लिखने से एक बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि आपने उस एप्लीकेशन में मिसरिप्रेजेंट किया है, और जब आपकी वेरिफिकेशन होगी फ्रॉम इमिग्रेशन रैकेट एग्जिट एंट्री से, तो वो सामने आ जाएगा और आपको काफ़ी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग स्ट्रिपिंग यू अवे फ्रॉम द परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस. So another thing which I've noticed, sometimes people living abroad, they hire agents or illegal consultants who are not Canadian lawyers, who are not licensed, but they are self-proclaimed consultants in those jurisdictions, and we have seen that we have found in a few cases that they even forge or try to forge with your visa exit entry stamps. In that case, when you're submitting your permanent residence renewal, PR card renewal application or citizenship application, you are providing photocopies, but at a later stage when an integrity interview is held, and if those stamps are caught, that becomes a very crucial and a grave allegation against you. And if you're unable to prove that you were innocent in it, that could fire back against you, and you will face consequences which could be as grave as cancellation of your permanent residence status. So never ever misrepresent the dates which you have not been in Canada on the application. Never ever try to manipulate the stamps. Never conceal any information from your lawyer. If someone advises you against the law or on certain activities which are considered illegal, तो ऐसी सूरत में जब आप किसी भी शख्स की ऐसी बात मानते हैं जो गैर कानूनी है और आप उस पर अमल करते हुए यू आर कॉट इन दिस, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज आपने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया या आपने उसकी एडवाइस को यूज़ किया. तो जहन में रखिए दैट इन द फ्यूचर, इन कमिंग डेज, now IRCC and CBSA will be documenting most of the travel entries and exits in there. So they may not be relying on your information whether you spent that much days inside Canada or not. Even at this stage, they have enough information to find anomalies in your submissions, and even to some level of certainty actually assess whether you have physically remained in Canada or not. But in near future, this is going to change. They may have automatic notifications or automatic determination of someone's breach of residency obligation through exit entry stamps, and in that case there is a possibility that automatic notices for breach of residency obligation may be issued. So the times of relaxed obligations is over. Yes, we have come across people who have not spent enough time in Canada. They renewed their permanent residences in the past. They became even citizen by misrepresenting, and this is not going to happen now onwards. So if you have any plan of spending your time outside of Canada, this is the time when you become a permanent resident. That is the time when you should consult, or when you are in breach of residency obligations, that may be another time, though it is a little late, that you consult a lawyer and an immigration, a Canadian lawyer. Please remember, any lawyer in another jurisdiction, even if he or she is a Supreme Court lawyer, he or she is not a Canadian lawyer. Canadian lawyer, somebody who is licensed in Canada and who regularly practices immigration law. You must go to that lawyer and evaluate your situation and find a legal solution to do it. So Nazreen,
इस के सबसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा इरादा है, कोई ऐसी मजबूरी है जिस वजह से आप कनाडा में रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस का टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको पहली फुर्सत में ही किसी कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर जो कैनेडियन लाइसेंस्ड हो उससे मशवरा करना चाहिए। किसी और मुल्क का लॉयर जो कनाडा में लाइसेंस नहीं है वो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर या कैनेडियन लॉयर नहीं है। लिहाजा राइट इमिग्रेशन लॉयर हु इज़ लाइसेंस इन कैनेडा, यू हैव टू गो टू देम और उनसे आप मशवरा करके और अपने लिए एक लीगल स्ट्रेटजी या लीगल एडवाइस उनसे लीजिए, ताकि आप किसी स्टेज में परमानेंट रेजिडेंस आपकी या सिटीजनशिप एप्लीकेशन थ्रेटन ना हो, आप किसी जगह पे भी मिसरिप्रेजेंटेशन के मुर्तकब ना हो, और जो भी चीज़ आप करें दैट इज़ legally permissible, and you are allowed to do that under the law. So ladies and gentlemen, thank you very much. I hope you might have liked this hybrid video, and if you have any questions, you are most welcome to get back to my office. We can arrange or schedule a formal legal consultation with you on your specific circumstances. Of course, there'll be some fee for that, but we'll be more than happy to advise on your particular circumstances. If you like the video, please subscribe to the channel. If you're not already a subscriber, press the like button, and for my contact details, you can find them at the end of this video. Thank you very much and have a wonderful weekend.